ऐसा मुश्किल है। ये स्ट्रीम सिर्फ खूबसूरत नहीं, ये टेस्ट भी है। पानी के ऊपर से गुजरना हर एसयूवी के लिए आम बात नहीं होती, लेकिन T2 के लिए ये भी सफर का एक हिस्सा है। और जब कॉन्फिडेंस मशीन पर हो तो एडवेंचर और भी मजेदार हो जाता है। एडवेंचर सिर्फ ड्राइव करने का नाम नहीं। एडवेंचर रुकने का भी नाम है और उन लम्हों को एंजॉय करने का जो शहर की भागदौड़ में कभी नहीं मिलते। इसीलिए T2 सिर्फ एक एसयूवी नहीं, ये आपका मोबाइल कैंप साइट है। और जब गाड़ी सिर्फ सफर नहीं लाइफस्टाइल बन जाए तब बात कुछ और होती है। सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये गाड़ी ऑफ रोड जितनी केपेबल है उतने ही कंफर्टेबल हाईवे पर भी लगती है। कैबिन क्वाइट है, राइड प्लांटेड है और हाइब्रिड सिस्टम पावर और एफिशिएंसी दोनों का बैलेंस देता है। ये उन लोगों के लिए बनी है जो सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं सफर भी एंजॉय करना चाहते हैं। हर एडवेंचर की एक कहानी होती है और हर कहानी किसी पहले कदम से शुरू होती है। शायद आज वो पहला कदम जेटोर T2 हो। पहाड़, नदियां, रास्ते या सिर्फ एक वीकेंड एस्केप। जहां भी जाना हो सफर यादगार होना चाहिए। और जब गाड़ी हर चैलेंज के लिए तैयार हो तो बस एक ही काम रह जाता है। जेटोर T2 IDM PHEV, थिंक एडवेंचर। अगर आप T2 को ईवी मोड पर ड्राइव करेंगे तो ये बिना पेट्रोल के तकरीबन 100 किलोमीटर की रेंज ऑफर करती है। और जब बात हो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल की तो IDM के साथ सिर्फ एक टैंक में ये गाड़ी 1100 किलोमीटर का सफर तय करती है। और अगर आपका डेली कम्यूट सिर्फ 100 किलोमीटर के अंदर है तो रोजाना पेट्रोल भरवाने की जरूरत ही नहीं है।
कच्चे रास्ते, पानी और ऊंचाई। देखते हैं टी2 इन सबको कैसे हैंडल करती है। जितना ऊपर चढ़ते जाओ, मंजर उतना ही खूबसूरत होता जाता है। लेकिन रात ही मुश्किल। इसी जगह एक असल एसयूवी की पहचान होती है। ग्राउंड क्लियरेंस, सस्पेंशन, ट्रैक्शन। ये कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस के साथ आप बिना सोचे अगला मोड़ ले सकते हैं और हर चढ़ाई को चैलेंज की तरह एंजॉय कर सकते हैं। पहाड़ों का सफर हो और पानी ना मिले, ऐसा मुश्किल है। ये स्ट्रीम सिर्फ खूबसूरत नहीं, ये टेस्ट भी है। पानी के ऊपर से गुजरना हर एसयूवी के लिए आम बात नहीं होती, लेकिन टी2 के लिए ये भी सफर का एक हिस्सा है। और जब कॉन्फिडेंस मशीन पर हो तो एडवेंचर और भी मजेदार हो जाता है। एडवेंचर सिर्फ ड्राइव करने का नाम नहीं। एडवेंचर रुकने का भी नाम है और उन लम्हों को एंजॉय करने का जो शहर की भागदौड़ में कभी नहीं मिलते।
कुछ गाड़ियां सिर्फ पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाती हैं, लेकिन कुछ आपको उन जगहों तक ले जाती हैं जहां रोड खत्म हो जाती है और एडवेंचर शुरू होता है। आज हम शहर से बहुत दूर निकल आए हैं, उन पहाड़ों के दरमियान जहां सिर्फ हवा की आवाज है, पानी की रवानी है और एक नया सफर हमारा इंतजार कर रहा है। ये है जेटोर T2 PHEV। हर एडवेंचर एक फैसले से शुरू होता है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का फैसला। और जब डेस्टिनेशन से ज्यादा सफर इंपॉर्टेंट हो, तब गाड़ी भी वैसी ही होनी चाहिए। मजबूत, रिलायबल और हर टेरेन के लिए तैयार। आज का रूट आसान नहीं। पत्थर, कच्चे रास्ते, पानी और ऊंचाई। देखते हैं T2 इन सबको कैसे हैंडल करती है। जितना ऊपर चढ़ते जाओ, मंजर उतना ही खूबसूरत होता जाता है। लेकिन रास्ते उतने ही मुश्किल। इसी जगह एक असल SUV की पहचान होती है। ग्राउंड क्लियरेंस, सस्पेंशन, ट्रैक्शन। ये कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस के साथ आप बिना सोचे अगला मोड़ ले सकते हैं और हर चढ़ाई को चैलेंज की तरह एंजॉय कर सकते हैं। पहाड़ों का सफर हो और पानी ना मिले, ऐसा मुश्किल है। ये स्ट्रीम सिर्फ खूबसूरत नहीं, ये टेस्ट भी है। पानी के ऊपर से गुजरना हर SUV के लिए आम बात नहीं होती, लेकिन T2 के लिए ये भी सफर का एक हिस्सा है। और जब कॉन्फिडेंस मशीन पर हो,
तो एडवेंचर और भी मजेदार हो जाता है। एडवेंचर सिर्फ ड्राइव करने का नाम नहीं। एडवेंचर रुकने का भी नाम है और उन लम्हों को एंजॉय करने का जो शहर की भागदौड़ में कभी नहीं मिलते। और जब गाड़ी सिर्फ सफर नहीं लाइफस्टाइल बन जाए तब बात कुछ और होती है। सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये गाड़ी ऑफ रोड जितनी केपेबल है उतने ही कंफर्टेबल हाईवे पर भी लगती है। कैबिन क्वाइट है, राइड प्लांटेड है और हाइब्रिड सिस्टम पावर और एफिशिएंसी दोनों का बैलेंस देता है। ये उन लोगों के लिए बनी है जो सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं सफर भी एंजॉय करना चाहते हैं। हर एडवेंचर की एक कहानी होती है और हर कहानी किसी पहले कदम से शुरू होती है। शायद आज वो पहला कदम जेटोर T2 हो। पहाड़, नदियां, रास्ते या सिर्फ एक वीकेंड एस्केप। जहां भी जाना हो सफर यादगार होना चाहिए। और जब गाड़ी हर चैलेंज के लिए तैयार हो तो बस एक ही काम रह जाता है, जेटोर T2 IDM PHEV थिंक एडवेंचर। अगर आप T2 को EV मोड पर ड्राइव करेंगे तो ये बिना पेट्रोल के तकरीबन 100 किलोमीटर की रेंज ऑफर करती है। और जब बात हो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल की तो IDM के साथ सिर्फ एक टैंक में ये गाड़ी 1100 किलोमीटर का सफर तय करती है। और अगर आपका डेली कम्यूट सिर्फ 100 किलोमीटर के अंदर है तो रोजाना पेट्रोल भरवाने की जरूरत ही नहीं है। हर रोड एक जैसी नहीं होती और हर गाड़ी भी नहीं।
कुछ गाड़ियां सिर्फ पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाती हैं, लेकिन कुछ आपको उन जगहों तक ले जाती हैं जहां रोड खत्म हो जाती है और एडवेंचर शुरू होता है। आज हम शहर से बहुत दूर निकल आए हैं, उन पहाड़ों के दरमियान जहां सिर्फ हवा की आवाज है, पानी की रवानी है और एक नया सफर हमारा इंतजार कर रहा है। यह है जेटोर T2 PHEV। हर एडवेंचर एक फैसले से शुरू होता है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का फैसला। और जब डेस्टिनेशन से ज्यादा सफर इंपॉर्टेंट हो, तब गाड़ी भी वैसी ही होनी चाहिए। मजबूत, रिलायबल और हर टेरेन के लिए तैयार। आज का रूट आसान नहीं। पत्थर, कच्चे रास्ते, पानी और ऊंचाई। देखते हैं T2 इन सबको कैसे हैंडल करती है। जितना ऊपर चढ़ते जाओ, मंजर उतना ही खूबसूरत होता जाता है। लेकिन रास्ते उतने ही मुश्किल। इसी जगह एक असल एसयूवी की पहचान होती है। ग्राउंड क्लियरेंस, सस्पेंशन, ट्रैक्शन। ये कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस के साथ आप बिना सोचे अगला मोड़ ले सकते हैं और हर चढ़ाई को चैलेंज की तरह एंजॉय कर सकते हैं। पहाड़ों का सफर हो और पानी ना मिले, ऐसा मुश्किल है। ये स्ट्रीम सिर्फ खूबसूरत नहीं, ये टेस्ट भी है। पानी के ऊपर से गुजरना हर एसयूवी के लिए आम बात नहीं होती, लेकिन T2 के लिए ये भी सफर का एक हिस्सा है।
और जब कॉन्फिडेंस मशीन पर हो तो एडवेंचर और भी मजेदार हो जाता है। एडवेंचर सिर्फ ड्राइव करने का नाम नहीं, एडवेंचर रुकने का भी नाम है और उन लम्हों को एंजॉय करने का जो शहर की भागदौड़ में कभी नहीं मिलते। इसीलिए टी2 सिर्फ एक एसयूवी नहीं, ये आपका मोबाइल कैंप साइट है। और जब गाड़ी सिर्फ सफर नहीं लाइफस्टाइल बन जाए तब बात कुछ और होती है। सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये गाड़ी ऑफ रोड जितनी केपेबल है उतने ही कंफर्टेबल हाईवे पर भी लगती है। कैबिन क्वाइट है, राइड प्लांटेड है और हाइब्रिड सिस्टम पावर और एफिशिएंसी दोनों का बैलेंस देता है। ये उन लोगों के लिए बनी है जो सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं सफर भी एंजॉय करना चाहते हैं। हर एडवेंचर की एक कहानी होती है और हर कहानी किसी पहले कदम से शुरू होती है। शायद आज वो पहला कदम जेटोर टी2 हो। पहाड़, नदियां, रास्ते या सिर्फ एक वीकेंड एस्केप, जहां भी जाना हो सफर यादगार होना चाहिए। और जब गाड़ी हर चैलेंज के लिए तैयार हो तो बस एक ही काम रह जाता है, जेटोर टी2 IDM PHEV, थिंक एडवेंचर। अगर आप टी2 को ईवी मोड पर ड्राइव करेंगे
आज हम शहर से बहुत दूर निकल आए हैं, उन पहाड़ों के दरमियान जहां सिर्फ हवा की आवाज है, पानी की रवानी है और एक नया सफर हमारा इंतजार कर रहा है। ये है जेटोर T2 PHEV। एक फैसले से शुरू होता है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का फैसला।
evening, ladies and gentlemen. If you could please make your way to the main event area, we are about to begin shortly. जो लोग अभी experience zone में हैं, वो please main event area में आ जाएं. We're about to begin the event shortly. Thank you.
evening, ladies and gentlemen, and welcome to a defining moment for Jetour, Pakistan. Today is not just about introducing new vehicles. It is about introducing a new era of driving, an era that is going to change the rules of the SUV game in Pakistan, an era defined by design, innovation, and endless possibilities. Welcome to the exclusive preview event of the Jetour T2 IDM. Today is a very special day because this is the moment where everyone has been waiting for, the much anticipated price announcement of the Jetour T2 IDM in Pakistan. And I must say, standing here, it's hard not to admire this amazing vehicle, and I personally really love this SUV. And honestly, I'd love to get my hands on this as soon as possible. To formally officiate the event, we will now begin with the recitation of the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان
jẹ́. Thank you for that beautiful recitation. I now request everyone please rise for the national anthem of Pakistan. Thank you, ladies and gentlemen. If you could please be seated. Every remarkable journey begins with a bold vision. Before we unveil the next exciting chapter of Jetour in Pakistan, let's take a moment to discover the story behind one of the world's fastest growing SUV brands. Launched globally in 2018, Jetour has quickly established itself as a leading name in the SUV segment, earning recognition for its striking design, advanced technology, exceptional performance, and adventure-ready capabilities. Today, Jetour has a presence in more than 60 countries and regions, inspiring millions of drivers with vehicles that are designed to explore beyond the ordinary. Now let's take a closer look at the remarkable journey of the Jetour brand. The history of human civilization is, at its core, a history of travel. Where did we come from? The answer lies not at the destination, but on the journey. The wheel has transformed the way humanity explores the world. Yet it has never changed our original aspiration to venture far and beyond. What people
गाइस इससे ज़्यादा तालियां बजनी चाहिए थोड़ी सी. Ladies and gentlemen, today marks another significant milestone in that global journey. We are not introducing a new vehicle, we are introducing a new way to experience adventure, innovation, and intelligent mobility. Today, you will witness the arrival of the Jetour T2 IDM plug-in hybrid electric vehicle. A vehicle that redefines capability, efficiency, and premium adventure for Pakistan. Let's begin this exciting journey together. To share the vision, journey, and future roadmap of Jetour, Pakistan, I would now like to invite our Honorable Chairman, Chaudhry Sanaullah, to please join us on stage and say a few words. Bismillahirrahmanirrahim. Respected members of the media, distinguished guests, valued partners, and dear team members, Assalamu alaikum. आज मौका आ गया है जिसका हम सब लोग काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि जब लौट जाते थे तो हम देखते थे कि स्पेशली मिडल ईस्ट में जो T2 गाड़ी है वो बहुत कामयाब थी, क्योंकि इसकी शक्ल जो है वो जी वैगन और डिफेंडर से काफ़ी हद तक उसकी रिजेम्बलेंस थी. तो इस वजह से जब हम लोग वहाँ पे जाते थे तो बल्कि मेरे अलावा बाकी लोग भी, तो एक ड्रीम था कि ये गाड़ी कब पाकिस्तान में आएगी. तो आज मैं अल्लाह का बेहद मशहूर हूँ कि आज अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया है और मैं ये गाड़ी आज पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ. तो आज इंशाल्लाह जितने भी अगर हम बाहर जाते हैं तो इंटरनेशनल ब्रांड जितने हम रोड्स के ऊपर देखते हैं, तो इंशाल्लाह अब हमारे पाकिस्तान की रोड्स के ऊपर भी वो सारे इंटरनेशनल ब्रांड जो हैं वो इंशाल्लाह आप इन सब को देखेंगे जो कि बाकी मुल्कों में हैं. इंशाल्लाह हमारे पास भी वो लोग उसकी राइड भी एंजॉय करेंगे. तो आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं जेटोर T2 IDM जिसको PHEV कहते हैं, उसकी प्राइस रिवील के लिए. आज हम इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस जो है वो अनाउंस करेंगे. जैसा कि ये आपको पता है कि ये गाड़ी बड़ी वैल्यूएबल है और ये सेगमेंट डी की गाड़ी है, सी की गाड़ी नहीं है, ये सेगमेंट डी की गाड़ी है. डी की गाड़ियाँ जो इस वक्त पाकिस्तान में हैं वो है फॉर्च्यूनर और उसके साथ साथ टैंक आई है. ये दो गाड़ी जो है वो सेगमेंट डी की गाड़ी है. ये भी जेटोर जो है वो सेगमेंट डी की गाड़ी है, सी की गाड़ी नहीं है. इसकी जो हाइट जो है वो एज पर डी सेगमेंट है. एक तो आपको ये चीज़ होनी चाहिए कि ये डी सेगमेंट है, दैट्स नॉट सी सेगमेंट SUV. दूसरा इसकी जो बिल्ट इन क्वालिटी है वो मच बेटर दैन द एग्जिस्टिंग SUV. मैं किसी का नाम नहीं लेता लेकिन इंशाल्लाह ये सबसे बेस्ट इसकी जो एफिशिएंसी और बिल्ट इन क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है. और शेप भी जो है वो SUV की शेप से ये थोड़ी सी डिफरेंट है, ताकि ये आप SUV बाकी जो देखते हैं वो सारी एक जैसी उसकी रोड्स हैं, एक जैसी उसका है शक्ल है, लेकिन ये इंटायरली डिफरेंट है. तो इंशाल्लाह आप जब इसको देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये गाड़ी जो है वो बहुत सारे लोगों ने देखी हुई है. तो ये गाड़ी हमारे रोड्स के ऊपर दूर से पता चल जाएगा ये गाड़ी आ रही है T2 और ये किसकी गाड़ी है. तो ये इंशाल्लाह आपको इसके कुछ इसमें फीचर्स हैं. ये जो इसमें DC और AC दोनों चार्जर हैं, फास्ट चार्जर भी है और नॉर्मल रूटीन के ऊपर भी आप इस जब घर पे चार्ज करेंगे तो ये घर पे चार्ज हो जाएगी. और इसमें जो EV का फंक्शन है वो अगर आपका डेली का ट्रैवल 100 किलोमीटर तो आप पेट्रोल की ज़रूरत नहीं है, उसमें आपको ज़ीरो पेट्रोल डलवाना पड़ेगा और ये 100 किलोमीटर का सफ़र आपका वो आराम से करेगी. और अगर आपको ट्रैवल करना है तो ये IDM पे चली जाएगी. उसमें ये 1100 किलोमीटर से 1200 किलोमीटर तक रेंज देती है. एक अगर आप टैंक फुल करते हैं तो टैंक का साइज़ है 70 लीटर का. तो ये इंशाल्लाह आपको लॉन्ग ट्रैवल के लिए और डोमेस्टिक ट्रैवल के लिए दोनों में कामयाब
तीसरी बात यह है कि ये ऑफ रोड और ऑन रोड गाड़ी है। इसको आप ऑफ रोड पे ले जाएं, स्नो में ले जाएं, पहाड़ों में ले जाएं, पानी में ले जाएं। जैसे आपको हमने यहाँ अभी जो वीडियो दिखाई है वो चकवाल की वीडियो थी, तो चकवाले में हमने इसको पानी में भी, पहाड़ों में भी, और जब स्नो आएगी तो स्नो में भी अच्छी परफॉर्म करती है, क्योंकि इसमें स्नो मोड एक सेपरेट है, स्नो मोड भी है। इसमें हर किस्म का मोड जो है वो सेपरेट है। जहाँ आपने जाना है, डेजर्ट में जाना है डेजर्ट मोड लगा देंगे, स्नो पे जाना है स्नो मोड लगा देंगे। तो ये गाड़ी आपको शहर भी और बाकी जहाँ जहाँ भी ये आप इसको ड्राइव करना चाहते हैं, आप फ्री ऑफ फियर आपको ड्राइव कर सकते हैं। ये गाड़ी हर लम्हे आपके एतमाद के ऊपर पूरा उतरेगी। तो इसमें यह है कि अभी आज जो कर रहे हैं ये कंपैरेटिवली आप उसको देखेंगे तो वो थोड़ी सी शहर की गाड़ी है। साइज में ऑलमोस्ट सेम है, लेंथ विड्थ हाइट में, और डी सेगमेंट की गाड़ी है। तो वो भी इंशाल्लाह हम अगस्त में उसको भी लॉन्च कर देंगे। और इसी तरह T1 जो है वो गैसोलीन में भी हम अगस्त में लॉन्च कर देंगे। अगस्त में हम 3 गाड़ियां लॉन्च करेंगे, T2 गैसोलीन, T1 गैसोलीन, T1 PHEV IDM हाइब्रिड, सॉरी प्लग इन हाइब्रिड। तो ये 3 गाड़ियां आएंगी। तो इसके अलावा इंशाल्लाह ऑलरेडी हम 2 गाड़ियां हमारी चल रही हैं, डैशिंग, जेटोर डैशिंग जो कि 5 सीटर है 1.5 लीटर में, और जेटोर X70 प्लस है जो कि 7 सीटर है, जो कि हम ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है। तो अब हमारी ये 4 गाड़ियाँ ये आने से, 2 गाड़ियाँ वो आने से हमारे पास 6 सेगमेंट हो जाएंगे। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि हम इंशाल्लाह दिसंबर तक आपको T0, उसको TX भी बोलते हैं, T0 भी बोलते हैं, TX या T0 गाड़ी देंगे जो कि EV में भी होगी और PHEV में भी होगी। EV में उसकी रेंज होगी वो 500 और 700 2 रेंज होंगी उसकी। तो आपको वो EV में मिलेगी वो C सेगमेंट की गाड़ी है। ये गाड़ियाँ T2 T1 जो है वो D सेगमेंट की गाड़ी हैं। जो TX या T0 गाड़ी है वो C सेगमेंट की गाड़ी है। तो C सेगमेंट में हम आपको T0 या उसका नाम TX या T0 लिखकर, उसके ऊपर TX लिखा होता है लेकिन T0 ही बोलते हैं, कोई X को 0 ही कंसिडर करते हैं। तो TX जो है वो हम आपको देंगे इंशाल्लाह दिसंबर में। दैट विल बी EV एंड PHEV बोथ। तो EV में उसकी रेंज जो होगी वो 500 वाली रेंज भी होगी, 700 वाली रेंज भी होगी। और जो PHEV है वो इसी तरह, उसकी रेंज जो 1500 किलोमीटर है। अगर आप उसके साथ प्लग इन हाइब्रिड के साथ पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी टैंक जो है 70 लीटर का है, और उसकी 1500 लीटर की है, क्योंकि वो साइज़ में थोड़ी सी छोटी है गाड़ी, तो इसलिए वो 1500 किलोमीटर करेगी। और इसके अलावा जो आपका अगर EV मोड के ऊपर करेंगे तो वो भी 100 ही करेगी PHEV। तो इस तरह हम स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको ये तमाम T सेगमेंट की जो गाड़ियाँ वो दे देंगे। और इंशाल्लाह 2027 में हम G700 गाड़ी देंगे आपको, जो कि इस वक्त मिडिल ईस्ट में बड़ी कामयाब है, बहुत पॉपुलर है, जो कि पानी में भी चल सकती है 60 किलोमीटर की स्पीड से। तो ऑक्सीनेटेड कैबन है उसका। तो वे इंशाल्लाह 2027 के एंड में फिर हम यहाँ पे इकट्ठे होंगे और इंशाल्लाह हम G700 की प्राइस रिवील करेंगे यहाँ पे। तो ये हम आपको ये T और G सेगमेंट की गाड़ियाँ इंशाल्लाह बड़ी जल्दी आपको ये सारी इंट्रोड्यूस करवाएंगे पाकिस्तान में, अंडर द प्लेटफॉर्म ऑफ जेटोर पाकिस्तान। तो मैं बेहद मशकूर हूँ आप लोगों का कि आप सब लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला और यहाँ पे आए। तो बाकी इसके आगे जो फर्दर प्रोग्राम है वो चलता रहेगा। और जो प्राइस है वो तो आखिर में सुनील मंच साहब हैं, वो प्राइस अनाउंस करेंगे, क्योंकि वो PhD हैं, कि जो गाड़ियों में PhD हैं, डॉक्टरेट ऑफ जो है वो गाड़ियों में। तो वो प्राइस वो अनाउंस करेंगे, क्योंकि जो मैं प्राइस कह रहा था तो वो कहते थे नहीं जी एक वाओ प्राइस होनी चाहिए। तो वो अपनी वाओ प्राइस भी यहाँ अनाउंस करेंगे कि मैंने वाओ प्राइस ये बताई थी। तो उन्होंने मुझे एक वाओ प्राइस बताई थी, तो मैंने उस वक्त उनको बोला था कि ये मुमकिन नहीं है कि आपके वाओ प्राइस के ऊपर मैं आ सकूं, क्योंकि ये गाड़ी महंगी है। तो लेकिन अब क्योंकि उन्होंने मुझे फोर्स किया कि नहीं ये वाओ प्राइस ही देनी है हमने, तो प्राइस वो अनाउंस करेंगे। तो इंशाल्लाह इससे आगे जो सेगमेंट आएगा वो नहीं कहा जाएगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब. Thank you so much for sharing details on the upcoming vehicle. Moving forward, ladies and gentlemen, I know everyone in this room is eagerly waiting for that special moment when these covers come off
and the Jetour T2 IDM is finally revealed. Trust me, we're getting very close. But before that, before we reveal the star of today's event, let's first understand what makes the Jetour IDM one of Jetour's most exciting SUVs. To take us through the Jetour T2 IDM specifications, key features, and our nationwide customer support network, please put your hands together for our Director of Operations, Mr. Malik M. Adnan. Thank you, Rafia. Assalamu alaikum, and a very good evening. To our friends, specifically our chairman, management team, dear principals, media personals, everyone who has joined us tonight, thank you for being here. I am Malik Adnan, and I have the privilege of serving as Director of Operations for Jetour Pakistan at the moment. The landscape behind us is not a stock image only. It is the kind of the country many of you have driven through, where the tarmac thins out, the air gets cloudier, and the road becomes a suggestion rather than a certainty. This is where Pakistan is at most beautiful and its most demanding as well. Jetour was built for exactly this. We are one of the fastest growing SUV brands in the world, present today in more than 90 countries, with over 2 million vehicles on the road, and tonight we bring that global capability home to Pakistan. So let me not keep you waiting. Let me show you what we came here to unveil. Ladies and gentlemen, this is the all-new Jetour T2 IM. Two words define it: think, adventure. Because the T2 IDM is not another SUV built for the school run and the shopping mall. Although it will do both specifically, it is a plug-in hybrid built for people who look at a map and see the empty spaces, not the ideas. It carries the road presence of a true expedition machine, the intelligence of plug-in hybrid, and the confidence to take you places most vehicles in its class would never dare to go. Tonight, I would like to talk through exactly what makes it more special, inside, outside, and underneath. Let's begin with how it looks and how it moves. Bold, tough, and adventurous. Look at the stance. That upright salute, the squared shoulders, the exposed spare wheel on the tailgate. This is a design language that says something before you have even turned the key. It says capable. But this is not styling for the sake of styling. On our left, T2, I am at home is deep snow. On your right, powering through water without hesitation. This is a vehicle designed to be photographed in the places you actually want to go. The northern areas, the coastal tracks, the river crossings, not just parked outside a cafe. Bold in the city, tough in the wild, and genuinely adventurous where in between. Now, good looks are one thing, but capability is engineered. So let me show the numbers that makes this possible. We call this precision in every dimension. And I would ask you to please look closely, because these are the numbers that separate a real off-roader from an imitation. The T2 IDM stands nearly 4.8 meters long, just over 2 meters wide, and 1880 millimeters tall, riding on a generous 2,800 millimeter wheelbase. This translates directly into presence on the road.
and space inside, which I'll come back to. But here where it earns the badge. A 39-degree approach angle at the front, a 30-degree departure angle at the rear, a 25-degree ramp breakover in the middle, 220 millimeters of ground clearance beneath you, and a varying depth of 700 millimeters. That's 70 centimeters of water this vehicle can drive through confidence. Spacious, connected, and luxurious. Open the door and the rugged character gives way to something refined. A driver-focused cockpit wrapped around a high-definition touchscreen, premium soft-touch materials, contrast stretching, a cabinet that feels considered, not assembled but designed. And that long wheelbase I mentioned pays off here. Generous head and leg room, supportive seating, and kind of comfort that turns a long drive to any part of the Pakistan into something you look forward to for the driver and for every passenger. This is a vehicle that is at home dropping the family to work and school on a Monday and is deep in the wilderness on a Saturday night, toughness on the outside, genuine luxury within, and at the heart of that experience is technology. So let's talk about the brains of this machine. 3 promises: high intelligence, high technology, and high adventure. The intelligence begins here with the Qualcomm Snapdragon 8155 processor. This is not an ordinary automotive chip. It's the same class of high-performance platform you will find the flagship devices. It means the system is fast, fluid, and responsive. No lag, no worries. That powers drives a crisp, intuitive display with smartphone connectivity, voice control, and everything the modern driver expects, all within easy reach. And there is adventure, because this technology is not confined to the city. The T2 IDM is built for the outdoors, a companion for campsite, the long weekend, the open sky, intelligent enough for your daily commute and ready for wherever the weekend takes you. Now, all this sits on top of what I believe is the real star of tonight. The powertrain. Let me show you the heart of the T2 IDM. This is the IDM, Jetour's intelligent plug-in hybrid system, and these 4 numbers tell you everything about why it matters. 360 horsepower of the combined output, 610 Newton meters of combined torque, a combined driving range of 1,100 kilometers, and up to 90 kilometers of pure electric range. Let me put that into a language we all understand. 360 horsepower means effortless overtaking and real muscle when you demand it. But here is the intelligence. On electric power alone, this vehicle will cover up to 90 kilometers, which means most of you, the daily commute happens on electricity, virtually on fuel at all. And when you do take the long road, Lahore to mountains and beyond, the combined range is up to 1,100 kilometers. Fewer steps, less anxiety, more journey. This is made possible by 3-speed super hybrid transmissions for smooth, efficient power at every speed, and a CTL battery 18.4 kilowatt hours from the world's leading name in the battery technology. Power when you want it, efficiency when you need it. This is the promise of the T2 IDM, and it adapts to you, which brings me to my next point. Equipped 1.5 TGDI,
the world-class hybrid engine, high efficient and low consumption. Maximum power, 115 kilowatts. Maximum torque, 220 Newton meter. Maximum thermal efficiency up to 44.5%. The exceptional performance beyond expectations. The pioneering 3-speed DHT and dual motor drive. The cutting edge and high performance hybrid transmission. The top performance empowered by the faster power transfer. Enjoy the faster charging speed with industry leading hybrid battery. The large capacity hybrid battery charges from 30% to 80% in just around 30 minutes. Higher charging efficiency. No time wasted waiting. Jetour T2 IDM. 18.4 Kilowatts hours large capacity mobile charging station. World first CTP technology. Simplified module structure. Lightweight design. Low energy consumption. High capacity to remove anxiety. Make every kilowatt hour count. Mountains and forests. Camp anywhere you like. 3.3 kilowatts external power output. Enjoy anywhere you like. Enjoy the party under the stars. Enjoy the AC 24 hours. No ignition needed, no fuel consumption. No engine damage concerns. Prevent cabin air from becoming stale. Heating or cooling anytime you need. Enjoy every moment with your perfect comfort. From stars to the sun. From nights to days. The exceptional range of Jetour T2 IDM. No more range anxiety. Pure electric for daily commuting. Zero fuel consumption for all week. The pioneering hybrid 3-speed DHT. Powerful across all the entire speed range with fast acceleration. Press the accelerator and just enjoy the exact power you want. Stable at mid speeds. Pure electric drive. Seamless shifting. Ultra quiet operation. Efficient at high speed. Optimal energy conversion, powerful performance across all speed ranges. Automatic energy recovery during deceleration, easier operation, saving both fuel and electricity. Thank you, ladies and gentlemen, for your attention. So, 4 modes, infinite possibilities. With a single turn of this dial, the T2 IDM transforms to match the world around you. Sport mode, when you want the full character of that 360 horsepower and 610 meters of the torque. Normal mode, your balanced everyday companion for the city and the highway. Economy mode, for maximum efficiency, stretching every kilometer, and snow mode, for grip and composure when the surface turns treacherous. Sand, snow, rock, or city state. One vehicle ready. For all of it, you do not adopt your plans to the car. The car adapts to your plan. Now, power and versatility are only ever half the story. The other half is keeping you and your family safe. And on that, we do not compromise. The T2 IDM comes with level 2 ADAS, advanced driver assistance, with more than 20 intelligent driving features working quietly in the background. Every second you are on the road, let me highlight a few that matters most on our roads. Smart cruise control with stop and go, which manages your speed and distance in traffic, so the bumper-to-bumper crawl becomes effortless. Keep lane keeping and lane forwarding assist to keep you centered and steady on the motorway. Blind spot collision avoidance assist, watching the spaces you cannot see. Driver attention warning, because fatigue on a long drive is real, and this system notices before you do.
and high beam assist and highway driving assist working together to make every journey calmer and safer. These are not the gimmicks. They are a second pair of the eyes, a co-pilot that never blinks, technology in the service of the thing that matters the most, bringing you home. And when it comes to protection, that philosophy is built into the very bones of this vehicle. Safety. Everything you have seen tonight is protected by two fundamentals. 6 airbags surrounding every occupant with a cushion of protection, and a body built from 80% high-strength steel, a rigid safety cage engineered to hold its shape and absorb the impact, keeping the space around you intact when it matters the most. This is what real safety looks like. Not a feature you see, but a foundation you can trust. Strength you feel in the way the door closes, and strength you would depend on in the moment you hope never comes. Bold design, intelligent power, and a fortress built around the people you love. That is the T2 IDM, and there is still more to show you. Jetour T2 IDM. The armored level impact resistance. Steel cage body. 80% high strength steel. Incomparable safety. Batteries with CTP design. 360 degrees armored. 0 blind spots of impact protection. IP68 waterproof. Minimum ground clearance 205 millimeters. Ultimate waterproof confidence with every weighting. Grateful. Now, ladies and gentlemen, everything I have shown so far, the power, the safety, the intelligence, all of it serves one single idea. An idea at the every heart of the Jetour brand. We call it Travel Plus. Travel Plus means this vehicle is not just about getting from point A to point B. It's about what you do when you arrive. Look at the space, fold the seats, and the T2 IDM swallows everything and adventurous demands. Tents, colors, bicycles, gear of the entire family, room to live, not just to sit. And here is where a plug-in hybrid becomes something for more than efficient. Vehicle to load 3.3 kilowatts of the power drawn straight from the vehicle itself. Let me tell you what that means in the real world. It means your campsite has the electricity, a refrigerator running, lights strung between the trees, a coffee machine is at dawn, every device charged, powered by the T2 IDM in the middle of nowhere with no generator and no noise. This is the vehicle as your base camp, your power station, the thing that turns an empty patch of the wilderness into a home for the weekend. That is basically the Travel Plus, and it defines everything Jetour builds. Of course, ladies and gentlemen, an adventurer should also look at the part. The T2 IDM will be available in 3 distinctive colors: Aero Silver, cool, modern, technical; khaki white, clean and expedition, inspired at home on any trail; and carbon crystal black, bold, commanding, and unmistakable. 3 personalities, one unmistakable salute. Whichever you choose, people will know it's a T2 the moment it turns the corner.
Now we are admired it from the outside. Let me take you back where you will actually spend your time. Let me take you inside for a more extended walkthrough. Ladies and gentlemen, advantage begins inside. Open the door, and the T2 IDM welcomes you into a cockpit that balances two things most vehicles keeps apart: rugged capability and genuine refinement. The driving position is commanding. In front of you, a large floating touch screen and a crisp, full digital cluster. Materials chosen to be touched, soft surface, precise stretches, and contrast switching that runs through the cabin like a signature. Tough enough for the trail, finished well that you will enjoy every ordinary drive in between. And it's in the details that this cabin truly comes alive. Let me show a few. Two details that tell you everything about the care poured into this interior. On your left, the greater selector, we call it luxury aviation handle, inspired by an aircraft throttle, finished with a customizable crystal element that catches the light every time you reach for it. A small thing you will touch 1,000 times, and it feels special every single time. And on your right, quality suit and leather, perforated, breathable, beautifully finished, seats designed to hold you through a large mountain drive and still look immaculate years later. Rugged where it counts, luxurious where it touches you. That is the T2 IDM philosophy in miniature. The steering wheel, rugged, D-shaped bottom, it looks purposeful because it's a confident grip, easier entry and exit, and every essential control right at your thumbs. And then sound. The T2 IDMs comes with a premium audio system by Sony. 12 speakers surrounding the cabin. Wherever it is your favorite music on the open highway, or the crystal clarity on the telephone call, this is a concert hall on the wheels. Because a great journey deserves a great soundtrack, now let's step back outside because the design story continues there too. Every line on this vehicle was drawn with intention. Let me point out two signatures at the rear. First, the race style tail lights, vertical, sharp, and unmistakable at night. When a T2 IDM is on the road ahead of you, you will know it instantly. That is the mark of a true design icon, recognizable from its silhouette alone. And second, this, we call it the exposed backpack, the external storage housing on the tailgate. And note to the overlanding expedition spirit of the vehicle, rugged, functional, and full of character, form and function, working as one. This is the design that does not just look good in brochure, it looks right in the wild as well. And when the adventure brings you back to the city, the T2 IDM makes everyday life just as effortless. This is the 5-degree panoramic imaging system, a full bird's eye view around the entire vehicle, and is crucially a see-through beneath the chassis, so you can watch the terrain and place your wheels exactly. On a tight city street, it makes parking very simple. On a rocky trail, it shows you precisely where your tires are going, city or wilderness. You're always in complete control and always aware of everything around you. Fast charger.
Keeping the T2 IDM ready for the next journey could not be simpler. With DC fast charging, the battery grows from 30% to 80% in just half an hour. The time it takes to enjoy a cup of chai and a short break, and you are ready to go again. Add the everyday convenience of charging at home, and the reality is this. For most of your driving, you may rarely visit a petrol station at all. The T2 IDM fits your life. It does not ask your life to fit around it. Now I have told you a great deal about what this vehicle can do. Allow me a moment to tell you who built it and why that should give you nothing short of absolute confidence. The T2 IDM was not built in isolation. It was engineered through a global senior R&D system, 6 overseas research institutes, and 4 major manufacturing facilities working as one. And it was proven in the harshest conditions on the earth: extreme heat testing in the deserts of the Middle East, extreme cold cross-country trials in the snow of the Nordic region, high altitude validation across plateau of the Central and South America. We are grateful for our principals present over here today, witnessing that how this vehicle is being presented. But look at the names behind the vehicle as well. Borg Warner, Continental, Magna, Schaeffler, Velo, Sony. These are the very same world-leading suppliers who engineer the components inside the most respected names in the global automotive industry. I share this for one reason. When you choose a T2 IDM, you are not taking a chance on something unproven. You are choosing a vehicle engineered to a global standard, validated across the world's most extreme environments, and built with the world's most finest partners, and now brought home to Pakistan by United Motors. That is the confidence behind this badge, and that name carries a meaning on its own. Jetour, 2 ideas joined a single world. Jet, forward momentum; progress, the drive to move ahead; and tour, the journey. Every road, every destination, every experience along the way. Together, they capture a simple philosophy that life is not measured only by where you arrive, but by how you travel to get there. It's why we call our promise Travel Plus, a lifestyle built around movement, discovery, and open road. We build for the people who look at the horizon and want to know what lies beyond it. For families who believe the best memories are made on the way, we build for explorers. Ladies and gentlemen, that's not just a tagline. Tonight, it is a promise from Jetour to Pakistan. So, this is all the new Jetour T2 IDM, bold, tough, and adventurous on the outside, spacious, connected, and luxurious within, intelligent, powered beneath you, and a fortress of safety around you. A vehicle built not just to be driven, but to take you somewhere. To our partners, extremely grateful for your belief in this brand. To the media, thank you for being here to share this moment within the nation. And to every future owner watching tonight, we cannot wait to see where this vehicle takes you. The road ahead belongs to those bold enough to explore it. From all of us at Jetour, Pakistan, extremely grateful, shukriya, and remember, drive your future. So, 26 authorized dealerships across the network, ladies and gentlemen, are basically available for your service with a booking amount of 2.5 million. I thank you very much for your patience and attention. Thank you.
Thank you, Adnan Saab, for such a detailed walkthrough in all of the features for our car. And now, ladies and gentlemen, the moment we have all been waiting for, the official launch price of the Jetour T2 IDM. I'm sure everyone has one final and one big question here. Can all these features, technology and capabilities come at an attractive price? पर उससे पहले मैं दो बहुत ख़ास मेहमानों को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी। हमारे पहले मेहमान जिन्होंने ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में अपना बहुत नाम बनाया है और वो गाड़ियों के एक्सपर्ट हैं, मिस्टर सुनील मंच। और हमारे दूसरे ख़ास मेहमान जो एक क्रिकेट लेजेंड हैं, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मिस्टर शोएब अख्तर। Pindi Express has left the station, that's for sure. Speed gave me a name, and time gave me the perspective. I'm sure about that. The fastest bowler alive, known as Rawalpindi Express. If that ball hits your chest, give it 10 on spot. Jaan jaoge, you'll come to know who I am. मैं क्यों हूँ किधर और मैं क्या करने जा रहा हूँ? ये कैसा बंदा होगा? ये किस किस्म का इंसान हो? दुनिया फेमस होगा? ये ऐसा क्या करेगा? पहले दिन से मैं आपसे पूछूं तो मैं क्या हूँ? लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आपकी भरपूर तालियों के साथ मिस्टर शोएब अख्तर। Ladies and gentlemen, it's time to invite another very, very important person here on stage, the CEO of Jetour, Pakistan. Please put a huge round of applause for Mr. Arsal Chaudhry. Thank you so much, Rafia. I'm so sorry for the delay. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, everyone. I hope you're having a great night. And I would like to start with, I hope you're having a great night. First of all, I would like to thank Allah Almighty who made this vision a reality. It gives me great pleasure to officially introduce Jetour T2 IDM PHEV in Pakistan. A globally recognized SUV, I would like to extend my sincere gratitude to our partners at Jetour International and
Thank you for the great vision and leadership, Mr. Chairman of United Auto Industries, Mr. Salaamullah Chaudhary, and and Director Sales and Marketing, Mr. Ziaullah Chaudhary, Director Jetour Operations, Mr. Malik Adnan, and my whole Jetour team who actually made this reality in real life. And now would like to call up on stage Mr. Shu to unveil the video, and Mr. Lucas to unveil the video, please. Please, Mr. Shu, come and join me on the stage, please. Isaac, can I have blackout, please? Mr. Shu, please come on stage, Mr. Shu. And now, Mr. Shu, the country head of Jetour, Pakistan, will be unveiling the video we have made. And thank you for your patience, ladies and gentlemen. The prize is going to be very, very soon. It's going to be out. Should we play the video now? Built to conquer, made to explore. Think adventure. You know, the all-Jetour T2 PHEV, military-grade built, plug-in hybrid, They will be standing inside. They will be standing in the middle. Would like to. And then, one part over there, it's going to be me, Mr. Shoaib, Mr. Smith, and Mr. Out. Country head of Pakistan, Mr. Shoaib. And Mr. Lucas, brand manager of Jetour. प्राइस आपने रीड करनी है शेयर प्राइस को गाड़ी की एक्सपेक्टेड प्राइस है अस्सलाम वालेकुम शुएब भाई। हाँ जी भाई अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सुनील भाई। वालेकुम सलाम। अब सारे यहाँ पूछने आए हुए हैं तो बता दें प्राइस कुछ शुएब भाई। प्राइस यार जो मैंने ऐड में कही थी वही है, उससे कम नहीं होगी, क्योंकि प्राइस जो गाड़ी की मैंने क्वालिटी देखी है, जिसमें ऑप्शन देखे हैं, वो प्राइस है 15 मिलियन। शुएब भाई जितने फीचर्स हैं इस गाड़ी में, मेरे ख्याल से 2 करोड़ तक तो प्राइस होनी चाहिए, क्योंकि फीचर्स भी तो देखे ना, आईडीएम टेक्नोलॉजी है, PHEV है। वैसे 2 करोड़ भी पूरी प्राइस नहीं है, वैसे मैंने 15 मिलियन मेरे ख्याल से देखे ना वो 2 करोड़ तक वो जा रहे, 2 करोड़ गया था अभी तक 2 करोड़ तक। सुनील भाई आप बताएं।
अभी सनाउल्लाह साहब ने बताया था कि मैंने वाव प्राइस बताई थी, तो आप दोनों की प्राइस गलत है। मैं फिर बता रहा हूँ कि वाव प्राइस होगी और 15 मिलियन से नीचे होगी। आपने तो, आप सीईओ हैं, आपने प्रॉफिट बनाना है, आप कहेंगे 2.5 करोड़ की हो जाए, बट फ्रॉम द कंज्यूमर साइड आई थिंक इट विल बी वेरी प्राइस आ गई मेरे ख्याल से। प्राइस 15 मिलियन आ गई है, लेकिन आप बात सुना यार, इसे काउंटर चला लेते हैं, जहां पे रुका वो प्राइस कर लेते हैं। क्या कहते हो सुनील भाई, आप ही अब एग्जैक्टली प्राइस बता सकते हैं, क्योंकि आई गेस आप अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं, आप ही बताएं। मेरा ख्याल है कि शोएब भाई इजाजत दें गुस्ताखी की तो इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। 15 मिलियन इज नॉट द प्राइस, आई एम टेलिंग यू फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। यार नहीं, देखते हैं। अच्छा यार चलते, तू प्राइस अनाउंस कर दे यार। अनाउंस करें या इसको चलाएं पहले? ट्रायल चला इसको लेते ट्राई चलाते हैं। जहाँ रुका, पहले एक बार टाइमर जहाँ रुका वहां पे रोक एक बार लेंगे। दोबारा हिलाओ यार, सही वाला हिलाओ, तुम पिछली बार भी गलत कर रहे थे यार, सही क्या ना करो। चलो जहां पे रुका वो प्राइस हो जाएगी, ठीक है। चले 10 लाख कम हो गई है, 140 हो गई। सुनील भाई आप बताएं आप। हाँ जी सुनील। स्टिल नॉट द वाव प्राइस। सनाउल्लाह साहब बैठे, उन्होंने जब ये गाड़ी लेके आए थे, मैं और वो चाइना में मिले थे, तो उन्होंने मेरे से पूछा था वाव प्राइस क्या होगी, एंड आई टोल्ड हिम द वाव प्राइस विल बी समवेयर अराउंड 135, उसके करीब करीब। तो मेरा ख्याल है उन्होंने कहा है, तो इतनी तो मेरी बात की लाज रखेंगे। तो फिर अभी सस्पेंस खत्म कर यार सुनील। मेरा ख्याल है अरसल ने खत्म करने, मैं तो विश लिस्ट बता दूं। अरसल सस्पेंस खत्म काम कर, करते हैं, आप ना प्राइस अब अनाउंस करें, मैं तो कहता हूं सस्पेंस खत्म कर और लोगों को ये बता कि एक्चुअल प्राइस इस गाड़ी की क्या होने वाली है। सुनील भाई, आपने वाव प्राइस 135 बोली, ठीक है, इन्होंने बोली 15 मिलियन। अब मेरे ख्याल से आप इसकी एग्जैक्ट प्राइस अनाउंस कर दें, क्योंकि सब वेट कर रहे हैं, प्राइस के लिए वेट कर रहे हैं, तो लेट्स जस्ट रिलीज द प्राइस। द प्राइस ऑफ T2 IDM इज 1,27,95,000। इट्स अ ग्रेट प्राइस आई गेस, बाकी आप सब बता सकते हैं। मिस्टर चेयरमैन इज हियर। थैंक यू वेरी मच फॉर कीपिंग द वर्ड सर। अस्सलाम वालेकुम जी। सुनील भाई की जो वाव प्राइस थी वो 135 थी, 1,35,00,000। लेकिन उसके बाद जब मैंने इनसे फाइनल डिस्कशन की, जब ये शूट के ऊपर आए, तो जब फाइनल डिस्कशन मेरी हुई, वो जो इनकी वैन थी उसमें बैठ के, तो सुनील भाई ने मुझे एडवाइस किया कि नहीं, वो वाव से भी आपने नीचे रखनी है। तो फिर ये प्राइस जो थी, ये इन्होंने ही प्राइस दी थी मुझे कि नहीं जी ये प्राइस रखनी है। मैंने कहा चलो जी आई विल गो विद यू। तो इंशाल्लाह अब ये प्राइस इनकी प्राइस ही है और इन्हीं की प्राइस को हम फॉलो करेंगे इंशाल्लाह। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो राइटिंग में बुकिंग की प्राइस आई थी वो थोड़ी सी गलत आ गई थी, वो भी सुनील भाई बता देंगे कि बुकिंग कितनी है। और कंपनी के नाम का पे ऑर्डर होगा, अगर कंपनी के नाम का पे ऑर्डर कोई नहीं बनाएगा, कस्टमर अगर किसी डीलर के अकाउंट में पैसे जमा करा देगा तो कंपनी उसकी जिम्मेदार नहीं होगी। अगर कोई भी कस्टमर डीलर के अकाउंट में पैसे जमा कराएगा तो कंपनी बिल्कुल उसकी जिम्मेदार नहीं है। कंपनी सिर्फ उसी अमाउंट की जिम्मेदार है और उसी बंदे को व्हीकल डिलीवर करने की जिम्मेदार है जो कि यूनाइटेड मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे पे ऑर्डर बनाएगा। सिर्फ कंपनी उसको ही गाड़ी देने की जिम्मेदार होगी इन टाइम। जो डीलर के अकाउंट में जमा करा देगा उसका कंपनी के साथ कोई कंसर्न नहीं है, कंपनी उसको बिल्कुल गाड़ी इशू नहीं करेगी और ना ही मजाज है कि वो हमारे से आके क्लेम करे कि मैंने पैसे जमा करवाए हुए हैं। तो वही जो हमें पे ऑर्डर मिलेगा इन शेप ऑफ पे ऑर्डर या इन शेप ऑफ क्रॉस चेक, जो हमारे पास कंपनी अकाउंट में आएगा यूनाइटेड मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड के अकाउंट में, हम सिर्फ उसी को एंटरटेन करने के मजाज हैं और उसी को एंटरटेन करेंगे। तो आप सुनील भाई आपको बता देते हैं कि बुकिंग असल प्राइस क्या है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी जो इन राइटिंग में आ गई थी, आई थिंक सो इट्स रॉन्ग। ठीक है सर, बुकिंग अमाउंट है जी 25 लाख रुपए, 2.5 मिलियन।
और जिस तरह सना साहब ने बताया कि शुड बी मेड इन फेवर ऑफ यूनाइटेड इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड एंड डिलीवरीज विल स्टार्ट इन सितंबर इंशाल्लाह. चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड कंग्रेचुलेशंस, वेरी गुड प्राइस एंड आई होप कि आप सारे बुक कराएं. मैंने आपको पहले से बुक कराया हुआ है, तो मेरी गाड़ी जो है इंशाल्लाह सबसे जल्दी आएगी. और शोएब भाई आपके भी नंबर मेरा ख्याल है 25 लाख का फ़ायदा हो गया आपका. बिल्कुल ऐसे ही. हाँ, ये शुएब भाई को और सुनील माई साहब को सबसे पहले गाड़ी हम इनको देंगे, क्योंकि जो इन फ्यूचर में जो हमारे ब्रांड एम्बेसडर भी हैं वो शुएब भाई होंगे इस ब्रांड के साथ, क्योंकि इन ब्रांड के साथ यही जचते हैं. तो इसलिए हमने T2 के लिए ब्रांड एम्बेसडर भी हम इन्हीं को साइन आउट कर रहे हैं इंशाल्लाह फ्यूचर में, क्योंकि जो इसकी स्ट्रेंथ है और जो स्पीड है और वो रावलपिंडी एक्सप्रेस के साथ ही जाती है, वो किसी और के साथ जाती नहीं है. तो हाँ जी, तो थैंक यू वेरी मच जी. Thank you everyone. Please, मेरे ख्याल से राफिया, please can you hijack? अरे शेख भाई. ये भी ले जाएं. Ladies and gentlemen, बहुत सारी तालियां हो जाए एक दफ़ा मिस्टर सुनील मांझ, मिस्टर अरसल चौधरी और शुएब अख्तर के लिए जी. Well, that's quite a remarkable price for a T2 IDM plug-in SUV hybrid. I believe this is a price that can redefine the expectations in Pakistan's SUV segment. Ladies and gentlemen, the Jetour T2 IDM is more than just an SUV. It's a perfect combination of intelligent hybrid technology, premium comfort, rugged capability, and everyday practicality. But we're not done yet, because seeing the T2 on screen is one thing, experiencing it in person is something entirely different. Ladies and gentlemen, may I now request all our respected members of the media, automotive journalists, bloggers, content creators, dealer partners, and distinguished guests to kindly proceed towards the Jetour Experience Zone. As we gather outside, we are about to witness a very special milestone. For the first time in Lahore, the Jetour T2 IDM plug-in hybrid electric vehicle will officially be unveiled. Ladies and gentlemen, if we could all make our way to the Jetour Experience Zone. May I now invite our Honorable Chairman, respected members of the Jetour Pakistan leadership team, and our special guests to join us at the unveiling stage. Ladies and gentlemen, this is the moment we've all been waiting for. Get your cameras ready, get your phones ready, because in just a few moments, we'll reveal a new benchmark in intelligent adventure. A bold design, a new era of plug-in hybrid technology, a new chapter for Jetour in Pakistan.
Ladies and gentlemen, what an incredible moment. Thank you so much for being a part of this very special milestone in Jetour, Pakistan's journey. Please enjoy the hospitality and take this opportunity to connect with our team and fellow guests. On behalf of everyone at Jetour, Pakistan, thank you once again for your team, your support, and your presence. Have a wonderful evening, travel safely, and we'll see you again at our next Jetour adventure. Thank you once again.